will do, we will first take a look at the revisions. Last time हमने questions पढ़े थे, तो हम थोड़े questions देखेंगे. उसके बाद हम थोड़े से different तरह के questions देखेंगे, जिसके अंदर हम Bist, Hast और Ist का इस्तेमाल देखेंगे. Why is this important? क्योंकि of course last time हमने देखा था कि last time हमने जो questions देखे थे, they were very much focused on where, who, what and so on. लेकिन इस दफा अगर हमें questions देखने हो कि are you this, have you this, is this color blue, तो फिर वो हम कैसे question देखेंगे. सही है. अगर हमें पूछना what is this color तो was आ जाएगा, बट अगर मुझे पूछना हो is this color blue तो फिर मैं वो कैसे पूछूंगा. सही है. उसके लिए words is यूज होगा. Then maybe we can look into something else, which is Sein and Haben. So these are two new concepts which we will learn today. And that's mainly about it. I think this is enough for today. First, let's do a quick revision and some words which start from W. Some questions based words are was, where, wann, wo, warum, wie and welcher. Yeah, welche. Yeah, welches. Was use होता है for what, ये use होता है for who, where is to, for example, wann is when, wo is where. इंग्लिश में आप इसको उल्टा याद कर सकते हैं, who, मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ दिमाग में. Warum is why, warum. Then we have wie is how and welche is which. सही है. Then and there's another question. जो last time we discussed something कि we feel और we feel में क्या फर्क है, and somebody on the group said it's about countable and uncountable nouns. So for example, we have uncountable words कि यार ओके पानी कितना है, या टाइम कितना हो रहा है, या फिर पैसे कितने हैं, तो उसके लिए वी फील यूज होंगे, वी फील गेल्ड हाज टू. लेकिन अगर काउंटेबल चीजें जैसे एप्पल्स कितने हैं, घंटे कितने हुए हैं और बुक्स कितनी है, फॉर एग्जांपल, उसके लिए वी फील यूज होगा, बिकॉज दीज आर काउंटेबल थिंग्स. आई हैव कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर यू हियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी फील जुकर ब्राउक्स टू, वी फील जुकर ब्राउक्स टू. सो ऑफ कोर्स चीनी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने दाने हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल बी we feel Zucker has to, या we feel costed thus. लेकिन अगर मुझे लोग गिनने हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी गिननी है, तो और अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जांपल, कहाँ लिखा था मैंने, आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट इट हियर, हाउ मैनी. यस, सो हाउ मैनी पीपल. सो मच के लिए फॉर एग्जांपल हाउ मच टेम्परेचर इज इट, हाउ मच दिस कॉस्ट, उसके लिए फील यूज हो रहा है. बट अगर हाउ मैनी पीपल है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस वी आर यूजिंग हाउ मैनी. We feel it, and we feel it target believe in we are how many days we are staying for. सही है जी. So today what we will do, we will study something new, and it is these three words: Bist, Hast and Ist. अगर मैं इसको यहाँ quickly लिखना चाहूँ for my own understanding, तो Hast use होगा for example have के लिए. यार okay, have you some time for me, have you an apple for me, something like this. Bist यूज होगा आर के लिए. मैंने अपने दिमाग में इसको ऐसे याद किया हुआ कि जैसे आर यू पाकिस्तानी. सही है. सो बिस्ट यूज होगा उसके लिए. और अगर मैं बोलूंगा इज दिस कलर ब्लू, तो उसके लिए इस्ट यूज होगा. तो जिस तरह जर्मन में इज का वर्ड इस्ट ही होता है, तो इज दिस कलर ब्लू फॉर एग्जाम्पल. सही है. सो वी हैव कपल ऑफ एग्जांपल्स हियर. लेट्स क्विकली रीड दिस एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल, बिस्ट डू स्टूडेंट फॉन बेरूफ, आर यू अ स्टूडेंट प्रोफेशनली. सो आर यू अ स्टूडेंट हो गया. इज पाकिस्तान ब्यूटीफुल, हैव यू एन आईफोन, इज नवाज शरीफ इंटेलिजेंट, हैव ताहिर शाह फील फैंस, जिन वी आर पाकिस्तानीज, आर वी पाकिस्तानीज, haben wir gute Politiker, do we have good politicians, have we good politicians, hast du eine Motorrad, do you have a motorcycle, या have you a motorcycle, जर्मन में इसको इस तरह बोलते हैं. Bist du intelligent, are you intelligent, bist यूज होगा. भाई स्क्रीन चली गई है, स्क्रीन शो नहीं हो रही. Omar, can you please mute yourself? Okay. So maybe we can have some volunteers who can answer these questions for us. Then we can look at a small table and then we do some more practice about these questions.
Anybody? Volunteers? Tufel? Faisal Tufel. Okay, Professor, let's start and answer these questions for us. Äh, Bist du Student von Beruf? Nein, ich bin Ingenieur von Beruf. Yes, very good. Ich bin engineer. Spelling शायद मैंने गलत लिखी है. Let me see. Quickly Google the spelling for capital N-I-E-U-R. EUR. NIEUR. Okay. Nine. Ich bin Ingenieur von Beruf. Okay, next. Ist Pakistan sehr schön? Ja, Pakistan ist sehr schön. Yeah, Pakistan is sehr schön. Schön means Beautiful. beautiful. Very good. O with an umlaut. Hast du ein Äh, iPhone? Ein ja, ich habe ein äh, ähm, iPhone. iPhone. Okay. Okay. Ist, Thanks. Yeah, ist chalo, continue. Is Nawaz Sharif intelligent? Nein, Nawaz Sharif is nicht intelligent. Here भी कह सकते हैं. Here is nicht. सही है. This is also okay. Okay, let's try one more. Hard Tahir Shah Feel fans. Ja, Taisha had viele Fans. Hard Feel fans. Okay, good. Thanks a lot. Let's try Mr. Talha Ishfaq. Sind wir Pakistanis? Ja, wir sind Pakistani. Ja, wir sind very good. Wir means we. Wir sind Pakistani. Next. इसका होगा 9. Wir haben schlecht Politik. Okay, yeah, good. Nine. Wir haben nine. Wir haben schlechte Politiker. Schlechte की spelling मैंने गलत लिखी. Let me see. I think CH आता है या SCH आता है. CHLECHT. Okay, this is the correct spelling. Okay. Two more. Hast du eine Motorrad? Hast du ein Motorrad? Ja, ja, ich habe ein Motorrad. Ein Motorrad. Very good. Bist du intelligent? Ja, ich bin Yeah, ich bin. And last question for you. Hat Zardari eine Schwester? Ja, Zardari hat eine Schwester. Ja, ihr habt eine Schwester. Okay, gut. Thanks a lot, Talha. Let's try Mr. Omar Munir. अस्सलाम वालेकुम सर। Alaikum salam. ईस्ट भाई शुन, ये भाई Yeah. यही वाला है। भाई इस वो है. भाई इस अल्ताफ भाई की बात हो भाई रही है. अच्छा, इस भाई ब्यूटीफुल। सोच रहे हो आप तो बड़ा यार, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. अच्छा, मैं उसका कह रहा था, समझा, इसको ट्रांसलेट करना है। या भाई इज ब्यूटीफुल। भाई इज शोन. शुन, डॉइस बोलनी है सर. ठीक है। ओके. आठ इमरान खान किंडर. 9 इमरान खान इज काइंड 9 किंडर। नहीं, इमरान खान की हैव इमरान खान किड्स. या या इमरान खान हाबे स्वाई किंडर। यस, हाबे नहीं होगा क्योंकि हाबे मेरे लिए यूज होता है, तो उस बंदे की बात हो रही है तो हार्ट आएगा. हाँ है स्वाई किंडर। Why Kinda the capital K. Okay, good. ये ज़ेन बेकार है, ये मुस्लिम। छोड़ दे. Let's come here. Hast du viele Freunde? ich habe 3 Freunde। Zwei Freunde. 2 Zwei Freunde. Okay, good.
ओके, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Zaid ear Pakistanis या क्यों है? और जाइड तो आंसर जाइड ईयर के साथ यूज होता है ना, यस, या या वियर या विया zen जिन पाकिस्तानी। Pakistanis. Okay, good. बाकी छोड़ देते हैं. So let's move forward and let's look at a सर table here. Yes. ऊपर जो इमरान खान वाला क्वेश्चन था नंबर 12 उसका आना है, इसमें किंडर के एंड पे ई नहीं आएगा फॉर प्लूरल? नहीं, plural is kinder, singular is kind. ओके ओके, थैंक यू। किंडर ये तो कुछ नया ही वर्ड है बट नहीं नहीं, ये किंडर सही इज लिखा आपने, आर ही आएगा यस, एंड में, किंडा किंडर आएगा, इज आर प्लूरल. साइलेंट होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सैफ भाई एक क्वेश्चन पूछना था। यस सर. असल में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही थी, जैसे जैसे ये कहीं हम हैट लगा रहे हैं, कहीं हम हाबिन लगा रहे हैं, इसी तरह इश्क लगा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी ना कंफ्यूजन थी, थोड़ा प्लीज अगर थोड़ा बता दें। यस एंड आई वुड से बिल्कुल फैसल भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आई वुड से आई विल नॉट टेल यू क्योंकि वी स्टडीड दिस सम टाइम अगो. अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा ठीक है, But मैं what देखूंगा। we will do, what we can do is कि मैं आपसे ये लिंक शेयर कर दूंगा onto the group. You just watch this 10-minute video and then you will understand कि कब क्या यूज करते हैं. सही है? जी 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 जी, मैंने देखी थी आपकी ना, बिल्कुल ओके, देखी। नाइस नाइस. थैंक सो जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो ई आएगा, जब मैं किसी और की बात कर रहा हूँ तो ई एन आएगा, अगर प्लूरल की बात कर रहा हूँ तो दैट्स अनदर टॉपिक. ठीक है सर, थैंक यू। सही है, मुझे कोई मसला नहीं है आपको बताने में, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वी कैन हैव अ रिवीजन सेशन. सही है, जस्ट टेल मी. थैंक यू वेरी मच। ओके. Okay, so let's move forward. Or as I said on the top, that we have a new topic. This was a new topic for us, and this is another topic for us. And we have two types of nouns we can use: Sein and Haben. सही है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम, साइन को कहते हैं टू बी एंड टू हैव. जैसे कि आई एम आई एम ब्लैक या आई हैव अ ब्लैक वॉच. सही है, आर टू सेपरेट थिंग्स. इसीलिए उनके साथ जो वर्ड्स यूज होंगे वो इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, जैसे इश बिन लीडिश, आई एम सिंगल. या मैं बोलूंगा इश हाबे आईने उआ, तो मेरे पास एक घड़ी है. तो डिपेंड करता है कि हम उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें. वी विल यूज दीज. और इन माय ओपिनियन आपको सिर्फ याद करने के जो है ना वो ये तीन है जो अभी हमने ऊपर देखे: हाबे या हैव वाली चीज, बिन या बिस्ट वाली चीज, और इस्ट वाली चीज. With these you can make all the other ones, so you don't have to think about it a lot in my opinion. You can learn it of course, but in my experience ये सब चीजें याद नहीं होती, ये सब चीजें with practice आती हैं. अगर आप ये सिर्फ तीन चीजें याद कर लेना, you can make the rest of them depending कि किसकी बात हो रही है और कितने लोगों की बात हो रही है, and then you can connect and make these words for you. Okay, इसका मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, so you guys can take a look after the class. Last, what we have some more practice questions, and maybe we need some more volunteers who can tell us and complete these sentences for me. Yes, 18 sentences हैं, we will not complete all of them. कुछ आप लोग खुद से भी कर लिएगा, but maybe we can do like 10 from here या 8 from here. Rest you can do it in your own time. So Mr. Talha Ishfaq has raised his hand, and yes, let's start. हाँ, तो पहला वाला होगा एयर इज स्टूडेंट फॉन द रूफ। यस, और ना इसके अंदर आप प्लीज ट्रांसलेट भी करते जाओ बाकी लोगों के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. दिस मींस ही इज अ स्टूडेंट बाय प्रोफेशन। यस, ही इज, तो इज आएगा, इस्ट. यस, ये है वे हाथ एन आईफोन, इसका मतलब है हु हैज एन यस, हु हैज आईफोन। एन आईफोन. वेरी गुड. अगला वाला होगा बिस डू पाकिस्तानी। Bist too. इतना Very good, पाकिस्तानी। very good, very good. So as I said, you don't have to remember this whole thing. आप तीन चार चीजें याद कर लेना अपने दिमाग में, बाकी आप खुद ही कनेक्ट कर सकते हैं. शायद आपकी कहीं गलती हो जाए, but that does not matter for now, at least in my opinion, on the A1 level. Okay, continue. अच्छा, ये वाला होगा वी आर जिंद फाइटर काइंड साइट, इसका मतलब है कि वी हैव नो टाइम टुडे।
Yeah, we are Yes. not अब आपने taking. इंग्लिश में क्या बोला? We have no time today. और तो हैव को जर्मन में क्या बोलते हैं? Haben. Wir sind होगा आई वेयर थिंक, वैसे हाबिन तो. ओके ओके, हाँ. Yes. True, true, true. So wir sind is wrong because इसका मतलब हो जाएगा we are today no time हम्म. and wir haben heute keine Zeit means We have no we time. have no ठीक time. है. सही है, very good. Good. 5. ये होगा राशिद hat einen BMW. Art. Very good. 6. Ich habe viele इश हाबे, Freunde. बिल्कुल इसको मेरी बात हो रही है तो I have हाबे many आएगा। friends. यहाँ पे sind आएगा. जिंड आएगा। Wir sind. We are and we We are. are very We are very intelligent. अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। Let's come here. Let's come to शगुफ्ता। Gupta hat eine sehr good student. नहीं नहीं Ist. नहीं नहीं, इसका होगा Is. इस. हाँ. गुफ्ता इस्ट Is. Very Yes. good. वहुम। Why? warum? इसका ईयर के साथ वाला मुझे याद नहीं है. Zaid. Yes. Good catch. Good catch. Good catch. It is Zeit. Yes. सही है। Good catch. Zeit का S छोटा होगा, sorry. Okay. And let's do 15. Herr Meyer, sind Sie neu hier? नहीं, क्वेश्चन है। क्योंकि हम आपके साथ कह रहे हैं ना कि आप यहाँ. Are you new here? sind Sie नहीं होगा. जिंजी, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। जिंजी, वरना बिस सोच रहा था मैं दिमाग में, बिस डू नहीं, सोच वो रहा था। बिस डू होगा, जिंजी होगा। इट इज करेक्ट। जिंजी बिस डू, यू आर करेक्ट। Yes. एंड वन मोर। Wir sind Pakistan. Zen Pakistanis. Very, very good. So what we learned today, just quickly to wrap it up, what we learned today was the use of these new words, these new pronouns, especially with the use of bist, ist, and hart, haben. ये सब कब आएंगे? This is very important when you're asking a question. सिर्फ वहुम, वी, वो से काम नहीं चलेगा. Of course, you will need to learn some more depending on how you are using them. Next, what we will study is timings and how to ask time, how to tell time. That is what time of the day. This is what we will learn next. So that is all from my side for today.